Write the third oxidation reaction. Haloform reaction. In this, please write shown by aldehyde and ketones. With CH3 C double bond O fragment. That means if you have any carbonyl carbon aldehyde or ketone which has CH3, which is attached to C double bond O. Okay, this should be CH3, not only carbon, it should be what? Methyl attached to the carbonyl carbon. Then only this reaction is being shown by aldehyde or ketones with this fragment. And then right, the reagent that we use is we use sodium hypohalite. Sodium hypohalite can be made by sodium hydroxide. And you treat this with any halogen atom. Okay. So if you treat with NaOH with chlorine, you will get NaOCl. If you treat it with Br, you will get NaOBr. If you treat it with iodine, I2, you will get NaOI. So sodium hypohalite has this formula, NaOX. Okay. So you can either you will be given this NaOH plus X2, sodium hydroxide plus iodine, or you will be given NaOI, any one of them. Now, right next, this is the reagent. And what does it form? It forms corresponding carboxylic acid with one less carbon and haloform. So in general, the reaction looks like RCHO plus ब्रैकेट में अगर आपके पास है NaOH plus Cl2, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा RCHO नहीं, if you have something like this, C double bond O CH3. Okay, this fragment is important. C double bond O CH3 should be there, and you will be getting RCOOH. So this CH3 is not here. So CH3 makes CHCl3, that is chloroform. Or you can be given something like this, R C double bond O CH3 plus NaOX. So you will make R COOH plus CHX3. Specifically speaking, if you have, let us suppose, acetophenol, then you react this with NaOCl, you will get benzoic acid, and this carbon will convert to chloroform, CHCl3. Important reaction is when you have iodine in case of halogen atoms. So if you have, let's suppose, double bond O plus NaOI, then in this case you will get 1, 2, 3 carbon, double bond O, OH plus CHI3, and this is a yellow PPT. Okay, so this acts as a test of which type of fragment. If it acts as a test for methyl carbonyl fragment. Okay, please write these reactions down and then write a point. Reaction with NaOI forms CHI3, which is yellow PPT. And therefore iodoform test
is used to detect methyl carbonyl fragment. Write this question down. एक और लिख लीजिएगा F में. ये सवाल लिख लिया आप लोगों ने. हनीफा, नवाल एंड रिफत. यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes, sir. बताइए. A, will it give haloform test or the iodoform test? Yes or no? एसीटोन. एसीटोन देगा. एसीटोन में ना. हाँ. टेल मी यस और नो. Yes, हनीफा, sir. नवाल, व्हाट डू यू थिंक? Yes, Nawal, what do you think? Will acetone give haloform? Yes, Nawal? Yes. Will it give? Yes. Rifat, what do you think? Yes. Okay, what about acetaldehyde? Will acetaldehyde give the iodoform test? Yes or no? Hanifa, tell me. Think so it will. Yes or no? Sorry. Yes. Okay. Nawal, what do you think? And Rifat? Yes, Nawal, tell me.
Yes, it will. Rifat, what do you think? Yes, Rifat. I'm not sure. Okay, how can you be sure? Can you make the structure of acetaldehyde? Yes. Can you send the photo? Make the structure and send the photo on WhatsApp. Hanifa and Nawal, you can answer me like this: A, yes; B, yes or no; C, yes or no; D, yes or no, करके in the chat. Rifat, send me the photo of acetaldehyde. Rifat, waiting for your photo. Send the photo of acetaldehyde. Nawal, I'm not getting any answers from you. Yeah, can you like elaborate it? तो उसमें fragment है ये वाला या नहीं है? आप लोग बस ये देखिए. See, Rifat, your structure is correct. You see, do you have this fragment? CH3 that is attached to C double bond. क्या ये है उसमें? Don't look Yes. at anything else. अगर if this fragment is present ना तो होगा, ठीक है? That reaction will be Okay. shown. Okay, doesn't matter whether it is ketone or aldehyde. Just look at this fragment, CH3 C double bond. If it is there, no matter whatever is present, चाहे hydrogen हो, चाहे phenyl group हो, whatever is present, this fragment should be present. Okay, send the answers now. Send the answers for A, B, C, D, E, F, G, F. Okay, one more answer, Hanifa. Also, Hanifa, I hope you have made the structures of these things, right? A, B, C, D, E, F, G. Yes, Hanifa? Yes, sir. Can you send the photo then on my WhatsApp? Okay. I just want to see. Yeah. Nawal. Okay. Okay. Nawal, can you also send me the photo of all these structures that you have made? You must have made these structures. Yes. Sir, I've sent it slowly. You have sent, oh, acha. It's single tick. Yeah, I did. Acha, okay, fine. Nawal, wait, send yours. It is uploading or is it like sent, but I have not received it? Like Is from it my sent? side,
From my side, I believe it has not. It has not. From my side, it has not been sent. yet. Okay, it has not been sent. It is still uploading. Yes. Achha, achha. Nawal, waiting for yours. नवाल आपने भेज दिया? Yes. अच्छा, you have also sent. मुझे अच्छा दूसरे मैसेजेस तो आ रहे हैं मेरे पास. कहाँ भेजा आपने? यस नवाल, व्हाट्सएप. Yes, sir. Okay. Nawal, did you receive my message? Achha, fine. I received Hanifa's message. Oh, B structure is fine. C structure is what? ठीक है हनीफा, सी स्ट्रक्चर. डी आपका सही नहीं है ना? डी देखिए क्या है. डी इज प्रोपेनल, right? So prop means how many carbon atoms? Tell me, Hanifa. Prop means how many carbon atoms? 3. जोर से. 3. 3. 1, 2, 3. And which carbon atom will have the aldehyde? Third one? First या third? First बोलेंगे उसको तो, है ना? Right, Hanifa? Yeah. Yes. So you see the mistake you have made? Yes. Okay. अब यहाँ पे देखिए कोई CH. This is the carbon atom which is having a double bond O. Right? If I make the complete structure, it will be like this: CH3, CH2 attached to C double bond O and hydrogen. Okay. So here we have C double bond O that is attached to CH2, not CH3. So this is not going to give you the iodoform reaction. ठीक है? Your structure is wrong. Let me see others. आपने E तक ही बनाया, F और G का तो आपने स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया. E स्ट्रक्चर E में क्या दिया है हमने? बेंजल्डिहाइड. ठीक है. F और G का नहीं बनाया आपने. Yeah. I was confused by that. ठीक है, देखिए. We have made these structures though. अगर आपको ध्यान हो, शायद 1 या 2 क्लास पहले हमने बनाया था ये स्ट्रक्चर. See, here we have, नहीं कल ही तो, शायद कल ही. ये देखिए, कल बनाया था ना, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन. राइट रफत, सॉरी हनीफा. Yes, sir. ठीक है, तो आपने तो बोला था कि हम पढ़ के आए हैं. ठीक है. डाई इथाइल कीटोन कैसे बनाएंगे इसको? You have ketone C double bond O and ethyl. That means 2 carbon atoms. Here also 2 carbon atoms. Methyl propyl ketone will have C double bond O. ठीक है, उसमें एक मिथाइल लगा रहेगा और दूसरा 1, 2, 3, 4 लाइक दिस. इसमें से बताइए, F में you can see this carbonyl carbon is attached to, this is CH2 CH2 and here the carbonyl carbon is attached to CH3. This is not going to give you the iodoform. This is going to give you the iodoform. Again, benzaldehyde will not give you iodoform because it is C double bond O and hydrogen. This carbon atom is attached to only carbon. This is not CH3, so this is not going to give you. Propanol is also not going to give you. Acetophenone is the benzene ring C double bond O and it is attached with CH3. So when you have C and CH3, then it is going to give you. ठीक है, acetaldehyde भी देगा, ये भी देगा. जब भी आपके पास, if you have this fragment ना acet, if you see acet name, then it will give iodoform. Because if you have acet का मतलब क्या है? You have CH3 C double bond. अगर acet aldehyde है तो this will be hydrogen. If it is acetone, then this will be CH3. If it is acetophenone, then this will be phenyl group.
ठीक है, अगर आपके पास एसिड वर्ड है ना, तो देन यू हैव CH3C डबल बॉन्ड। जब भी आपके पास देखिए एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड, एसिटोफेनॉल, all of these are going to give you the iodoform test. Please write this down. I think I have answered all of these. क्रॉस है, यहाँ पे टिक है, यहाँ पे टिक है, ठीक है, छापिए। देखिए स्ट्रक्चर बनाने में अभी भी आप लोग को दिक्कत हो रही है ना, इवन इफ यू नो दी कंसेप्ट, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आया तो आपका वो मार्क्स चला गया। तो प्लीज जो लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हम कंसेप्ट्स को पढ़ के मार्क्स ले आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इट्स नॉट राइट। यू हैव टू नो दी स्ट्रक्चर्स आल्सो, नेम से स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए। इफ यू डोंट नो दैट, फिर बहुत सारे सवाल छूट जाएंगे आपके। ओके, सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस जहां पे आपके पास इस तरह से दिए गए हो, नाम दिया हुआ हो। ओके, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, नेक्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन। First of all, write a point shown by aldehyde and ketone. Shown by aldehyde and ketones containing at least one alpha hydrogen. Raise your hand if you don't know alpha hydrogen. Alpha hydrogen हम समझा देंगे फिर। If you know alpha hydrogen, then we can proceed. If you don't know, please raise your hand. What is alpha hydrogen? Okay, fine. All of you know what is alpha hydrogen. Then please see. Aldol condensation is shown by aldehyde and ketones. और यहाँ पे aldehyde reacts with aldehyde, है ना? Ketones react with ketone. So the reaction is done with the molecule itself. ठीक है, with the molecule itself. For example, if I have acetaldehyde, for example, if I have acetaldehyde, that is CH3 CHO, and it is done in the presence of slight base, in the presence of OH negative. ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? Let us see. This, please don't write anything. Please listen very carefully. Please listen very carefully and write on like short notes. हम जो चीज लिख रहे हैं वो नहीं, जो हम बोल रहे हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो चीज इंपॉर्टेंट है हम वो बता रहे हैं आपको। ठीक है, प्लीज सी हियर. This does reaction with itself. That means we will require 2 molecules of acetaldehyde. Now, how to write both of these molecules so that you can predict the product? For one of the molecule, you will expand the carbonyl carbon. What did I say? One molecule, you will expand the carbonyl carbon, C double bond O, and you will show the next bond like this. Is that clear? एक molecule का क्या करना है, क्या expand करना है बताइए? What do we have to expand for one molecule? Which carbon? Carbonyl carbon. कौन सा expand करना है? Carbonyl carbon. Plus for the next molecule कौन सा? यही वाला है हमारा next molecule, है ना? It does the reaction with itself. That means this is my next molecule. So for the next molecule, for the second molecule, you will expand the alpha carbon. You will expand the alpha carbon. Tell me which is the alpha carbon here, 1 or 2? Which is the alpha carbon, 1 or 2? Which is the alpha carbon? जोर से बोलिए। बिहारन है बिल्कुल। आप लोग कहाँ से आई हैं? अरे इसीलिए तो हम पूछ लेते हैं आप लोगों से। देखिए हम डांटेंगे आप लोगों को, है ना? आपसे जब पूछा, एक आदमी को पता होता है कि हमको क्या नहीं पता है, राइट? यू शुड नो व्हाट यू डोंट नो। देन देयर आर पीपल हु डोंट नो व्हाट दे डोंट नो. That is ultimate level of ignorance, right? See, what is alpha? There is a functional group. Functional group से directly attached जो भी कार्बन हो. What is the alpha carbon? Alpha carbon ये हो गया। इसमें अगर आपके पास हाइड्रोजन हुआ, this is known as the alpha hydrogen. All of you got what is alpha carbon? Yes or no? Please tell me. Yes. Yes, sir. अब बताइए इसमें which is the alpha carbon? One. अरे what is the functional group बताइए? What is the functional group? Sorry? CH. CO. क्या बोला आपने? आपने बोला CO. O तो नहीं बोला. What did you say? It is C double bond O. So this is the functional group. Now tell me what is the alpha carbon? Which is the alpha carbon? ये तो functional group हो गया ना? ये तो alpha carbon कभी हो ही नहीं सकता. That is a functional group that cannot be an alpha carbon. ठीक है?
Now what is the alpha carbon? Tell me. What is attached? 2 is an alpha carbon and also 6 is an alpha carbon. ठीक है, दोनों। अच्छा, अगर आपके पास मान लीजिए ये हुआ तो अब अल्फा कार्बन कौन है? 3 and जोर से बोलिए। 3 and 1. है ना? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? टेल मी। CO. व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? सॉरी, वंस अगेन कैन यू प्लीज रिपीट? CO. ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है भाई? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? COH. COH। ये फंक्शनल ग्रुप होता है। No. व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप देन? टेल मी। OH इज द फंक्शनल ग्रुप ना? क्या हो गया आप लोगों को? हाँ, ठीक है, OH यहाँ पे है ना फंक्शनल ग्रुप। अरे, जब आपके पास एल्डिहाइड होता है तो आप CHO बोलती है ना, तो CHO बोलिए। अब जब आपके पास अल्कोहल होता है तो आप तो OH बोलती है ना, तो OH बोलिए। इतना इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लाइक इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप बोलिएगा सर यहाँ पे कार्बन क्यों लिया? अरे भाई, क्योंकि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O ही फंक्शनल ग्रुप था, कीटोन में ये दोनों ही आ जाते हैं। इज दैट राइट? यस और नो? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अरे आ रहा है कुछ समझ में? नहीं आ रहा है? सो रहे थे क्या बिल्कुल आप लोग? ऑल इफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज एन अल्फा कार्बन? यस और नो? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को। व्हाट इज द अल्फा कार्बन हियर? टेल मी व्हाट इज द अल्फा कार्बन हियर? ए स्ट्रक्चर में कौन सा है अल्फा कार्बन? और बी में? 1 or बी में 3. कौन सा? 1 और 3। ठीक है, फर्क समझ में आ गया सबको? हाँ या ना? जल्दी बताइए। ऑल ऑफ यू Yes, गॉट sir. दिस? यस और नो? Yes. अब बताइए यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा है, ए या बी? जल्दी बोलिए। व्हाट इज द अल्फा कार्बन, ए और बी? A. वेरी गुड। तो किसको एक्सपैंड करेंगे? एक में कार्बोनिल एक्सपैंड करना है और एक में अल्फा एक्सपैंड करना है। लास्ट नहीं एक्सपैंड करना है। बोलिए एक बार। आई विल नॉट एक्सपैंड दी लास्ट कार्बन, आई विल एक्सपैंड दी अल्फा कार्बन। बोलिए। आई विल I आई will विल not expand the last carbon. I'll I expand will the alpha expand the carbon. alpha carbon, है ना? And it is not necessary that the last carbon is the alpha carbon. For example, ये देख लीजिए, C double bond O and hydrogen 1 2 3। बताइए कौन सा अल्फा कार्बन है यहाँ पे? What is the alpha carbon here? जोर से बोलिए। 2, 2। And what is the last carbon? 3. 3. ठीक है, ध्यान रखिएगा। सब कुछ बता दिया हमने, जितने भी पिटफॉल्स थे। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, अब गलती नहीं होनी चाहिए। So in one carbon I will expand what? Tell me. In the first molecule I will expand what? What will I expand in the first molecule? जोर से। The first The carbonyl carbon. First क्या carbon? carbon and carbon. Carbon. Carbonyl carbon. And what will I expand in the second? Last one. Last? Alpha. नहीं. कौन बोला last? कौन बोला last? Me. Which carbon? Alpha. फिर से बोलिए, which carbon? Alpha. हाँ, लास्ट आपको नहीं एक्सपैंड करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो विल एक्सपैंड इट लाइक दिस। जरूरी नहीं सब में CH3 आए, ध्यान से कीजिएगा, बस एक्सपैंड मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एंड हियर यू विल राइट CHO एज इट इज, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, CHO लिख दीजिए आप। नाउ हम आगे बताएंगे नहीं, अभी अभी आप लोग को हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। ये आप CH3 CH2 CHO। ठीक है, अब OH नेगेटिव इसमें करेंगे। आप ये हमको करके बताइए, इसका इस तरह से लिख के बताइए पहले। सेंड मी द आंसर। हाउ विल यू एक्सपैंड दिस मॉलिक्यूल? यू विल एक्सपैंड द कार्बोनिल कार्बन, फर्स्ट मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन, सेकंड मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन। चलिए,
Do you see the problem, Hanifa? How many carbon do I have here? Tell me. Hanifa, how many carbons do I have here? 3. And how many carbons आपने क्या ही expand किया है? पूरे को कीजिए ना यहाँ पे. I did not miss any carbon. यहाँ पे 2 कार्बन थे तो दोनों को हमने किया ना. I wrote all both of things. Try once again. फिर से try कीजिए. I hope you got the problem. Nawal, waiting for you. हनीफा, आपका तो पुराना मैसेज भी नहीं आया. आप किसको भेज रही हैं? हाँ नवाल, डिड यू गेट माय मैसेज? अच्छा नहीं, आपको पुराना मैसेज तो आया था. गॉड, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपके मैसेज पाने में? अच्छा, हनीफा, आर यू रीट्राइंग? Yes. प्लीज सेंड द आंसर वंस अगेन. नवाल, आप हमको डिक्टेट कीजिए तो क्या लिखे बताइए यहाँ पे. व्हाट शुड आई राइट? बताइए. टेल मी, हाउ शुड आई एक्सपैंड दिस? फर्स्ट मॉलिक्यूल को कैसे लिखेंगे नवाल? CS3. CH3 ऐसे, ठीक है. Yes. उसके बाद C. जोर से. C. C. ओके. Double bond. कहाँ है डबल बॉन्ड? अरे भैया, यहाँ पे CH3 के बाद तो CH2 है ना. डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया? मॉलिक्यूल के डिपेंड करेगा ना. मॉलिक्यूल क्या कौन सा है? आप क्या मॉलिक्यूल लिख रही हैं? व्हाट इज द मॉलिक्यूल दैट आई हैव गिवन यू? CH3 CH2 CHO. CH2. Where is the carbonyl carbon? Where is the carbonyl carbon? 2. 2. सेकंड कार्बन कार्बोनिल कार्बन है नवाल. No, it's 1. 1. ऑक्सीजन तो है ही नहीं इसमें. कार्बोनिल कार्बन में डबल बॉन्ड O होगा ना. क्या हो गया? यू कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट इज द कार्बोनिल कार्बन. क्या है भाई? ओह माय गॉड. अच्छा, हमने रोक लिए यहाँ पे. कार्बोनिल कार्बन कौन सा है यहाँ पे? 2. यहाँ पे कौन सा कार्बोनिल कार्बन है? 1. यहाँ पे 3. ये क्या 1 2 3? पहले 1 2 बोल रही थी आप. हाँ नवाल. टेल मी. टेल मी कि बोला हमने, आपने माइक ऑफ कर लिया. जी भाले भाई, आप लोगों का तो बिल्कुल ही. टेल मी अगेन, व्हाट शुड आई राइट नवाल? C double bond. नहीं. यहाँ पे यू विल राइट द कंप्लीट कार्बन चेन. ओके, हम आप लोग पूरा लिखिए. CH3 लिखिए, CH2 लिखिए. उसके बाद जो भी आपके पास कार्बन कार्बन ये वाला है ना, तो इसको आप एक्सपैंड करके लिख दीजिए. इज दिस नॉट व्हाट आई टोल्ड नवाल? Yes. Sir. फिर उसके बाद बताइए क्या लिखे हम यहाँ पे. व्हाट शुड आई राइट हियर? आई शुड एक्सपैंड विच कार्बन? यहाँ पे कौन से कार्बन को लिखे हैं? 1 2 या 3? The alpha 1 2. कार्बन लिखा हमने. उसके बाद इट हैज हाइड्रोजन.
another hydrogen. What should I write here and here? Tell me. फर्स्ट बॉन्ड के साथ क्या लिखें, सेकंड बॉन्ड के साथ क्या लिखें बताइए? CHO. CHO and here? H. सॉरी, H. ठीक है, यही दिक्कत है ना. देखिए कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है. दिस इज द कार्बन यू आर राइटिंग. सेकंड कार्बन लिख रहे हैं ना आप, तो 2 ही तो हाइड्रोजन है, तीसरा हाइड्रोजन क्यों लिख रही हैं आप? व्हाट इज द थर्ड बॉन्ड? एक तो आपके पास CHO हो गया, फोर्थ बॉन्ड कौन सा है यहाँ पे? टेल मी. दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 2 हाइड्रोजन्स एंड CHO, एंड व्हाट इट इज अटैच्ड टू नेक्स्ट? CS3. फिर आपको अगर ये सारी चीजें लिखने नहीं आ रही हैं तो फिर तो आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए. स्ट्रक्चर आप लोगों को ठीक से अगर लिखना नहीं आ रहा है तो. चलिए इसमें बताइए कैसे लिखेंगे फर्स्ट मॉलिक्यूल. हनीफा आप बताइए यहाँ पे, हाउ विल आई राइट द फर्स्ट मॉलिक्यूल? हनीफा, CH3. you speak loudly please, and then CH3. see it. Look at the attached. molecule, look at the molecule. कहाँ है CH2? Sorry, you did not say CH2, तो फिर ठीक से बोलिए, हमको No. CH2 सुनाई थी. Okay, after CH3, my bad, sorry. After CH3, Is C, like bond C, bond C, then double bond O. double bond O. Cannot say. Sorry, that's it. Yes, Hanifa, There's no other attachment to it. there is no other attachment. So we'll proceed to the next one. Sorry, this carbon, na? Yeah. How many bond does this carbon have? No, I was talking about the first one. The CH3. Yeah, I mean that this is the CH3, not CH2. I don't know why. Mm. Okay, but this carbon is attached to something else, right? So you have to write that also. You have to write this complete molecule, na? Then C and 3 hydrogen. Did I not write this? I mean complete molecule. आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या? हमने छोड़ दिया क्या इसको बस CH3 से बॉन्ड लगा के? Tell me, what should I write next? This should be bonded to? C. Arey, look at this carbon atom and tell me. 1 CH3, 1 double bond O. What is remaining? CH3. CH3 is remaining. Plus. Now tell me which carbon should I write? 1, 2, or 3? Here I should write which carbon atom? One. Carbonyl. Which carbon? 1, 2, or 3? I have numbered it. Two. Please look at the 2. 2. 1, 2, or 3. Tell me which one. Which carbon, Hanifa? The Which carbon? 1, 2, or 3? I know alpha carbon is the answer, but which carbon is the alpha carbon? 1, 2, or 3? Mm. 1, 2, or 3, Hanifa? Once again, I could not hear that. Well, both of them are attached to the carbon group, right? Sorry? Both of them are attached to it. So you say 1 or 3. What will you say? 3. 3, 1 or 3, anything, right? So you expand. Now you will write it like this. CS3 connected with hydrogen, connected with hydrogen, connected with hydrogen. And then this carbon is connected to? Third carbon is connected to what carbon? The carbonyl. Carbonyl. C double bond. Oh, and then? CH2. What? After this? Repeat what you said, Hanifa. CH. CH? CH.
3 on hydrogen. This one, no? CH3, right? Yeah. Again, I heard CH2. I don't know why. Tell you, what should I write here? Tell me. What should I write here? CH3. CH3. आप ये देखिए ना 1 2 3 4 5 कार्बन से, इसमें से आपने कौन सा कार्बन लिखा है यहाँ पे बताइए हनीफा, which carbon you have written? The CH3 is which carbon? Second one. सेकेंड वन तो CH2 होगा ना भाई मेरे, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, हाइड्रोजन का पता नहीं चल रहा है आप लोगों को, डांट सुनिएगा आप लोग बहुत ज्यादा हमसे फिर, The first one. तुक्का मारने बैठ गए हैं बस आप लोग, ये नहीं पता कि CH3 कौन सा कार्बन है यहाँ पे. Then what should I write? One is connected to CH2. and then the third carbon atom is The C double one. C double bond O, and then I will not go like this. I will not go like this. I will go down. Okay. And then CH2. after that, what? After CH2? CH3. Again, you said CH2, right, Hanifa? No, I said 3. What's your mic then? Nawal, did you hear CH2 or CH3? I heard CS3. Okay. Now, which carbon should I write here now, Hanifa? 1, 2, 3, 4. Which is the alpha? The second one. Second one. So I'm writing the carbon. This carbon atom will contain how many hydrogens? 2. 2 hydrogens. Then, what should I write next? The carbon. And then, CH2. and then, oh, I got disconnected. Nawal, complete this after CH2. Nawal, CS3. CH3. And here, C2. sorry, keep your mic on, Nawal. CS3. Okay. So understood, Nawal, how to write these type of like how to write the reactants? Yes or no? Yes. Okay. Now after this it will be very easy. Okay. After this it is going to be very easy. This was our first molecule. ध्यान से सुनिएगा नवाब. You write whatever is there in this particular chain. You will write whatever is there in this chain. ठीक है? You will write whatever is there in this chain. ठीक है? You will write whatever is there like this. इस तरह से, except the hydrogen atom. क्या होगा? Please see. Don't write, okay, Nawal? This hydrogen you will shift to this oxygen atom. Hydrogen will be shifted to that oxygen atom. ठीक है? And now you will tell me what should I write? And this carbon atom will become COH. Hydrogen will shift to this oxygen, so it will become OH. So tell me, what should I write here in the product? CH3. CH3 bonded to OH. carbon, OH, and it also has a hydrogen here. Yes. After that, C. carbon atom. And what bond does it have? H. H, HCH. H, CHO. Okay, this is known as, this is the alpha carbon, this is the beta carbon because CHO. So this is known as beta. It has hydroxy group. And this will be aldehyde. Don't write anything. Now, after that, we heat it in the presence of a mineral acid H+. So this water molecule, as you can see, this water molecule will be dehydrated. Okay. And when water molecule dehydrates, we get a alkene. We get a alkene here. So you will get CH3
Then this is CH, double bond CH, single bond CHO. Got it? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Hanifa, are you there? Can you hear me? Yes, sir. Okay. Please now listen. Once you have written it like this, you need to have all of these carbon atoms, जो कि आपके straight line में है, together. This will be in straight line. Okay. So in the second, we'll have all of these carbon atom in a straight line. Here you will have all of these carbon in a straight line. Here you will have all of these carbon in a straight line. ठीक है? Now you tell me, Hanifa. In the second case, don't write anything, Hanifa. Please listen. In the second case, one thing you have to do is you have to join all of these carbon atoms. Okay? And this hydrogen will shift towards this oxygen, and oxygen will become C single bond OH. What will happen to this carbon atom? Tell me. What's going to happen to this carbon atom? Hanifa? This will convert to? Hydrogen C single bond. It will convert to COH. Okay. So what should I write the product? Tell me. CH3, CH2, CHO. CH, O, OH, and then this carbon atom. Yeah, C, CH2. CH2. No. This had the hydrogen. ये hydrogen तो shift हो गया ना, तो कितना बचा? O, This has 3 C, bonds, right? C, 3. Tell me what is A, tell me what is B, and tell me what is C. What is A? A will be? Hydrogen. Okay. What about B? B will be? CH2. What? CH3. CH3. And then C will be? CHO. Got it? Yes. Easy? Yeah. Okay. And then after that, we do H plus in the presence of heat. This is dehydration reaction. And in this water molecule, okay, which is between this alpha and beta carbon, this water molecule will leave. And when water molecule gets eliminated, we get an alkene. So you will get a double bond between alpha and beta carbons. So you have 1, 2, 3, 4, 5 carbons. You can just write it like this: 1, 2, 3, 4, 5. Fifth carbon is CHO. Fifth carbon is CHO. This is the alpha carbon. Alpha carbon has a CH3. Beta carbon does not have OH. It will have a double bond alpha and beta ke beech mein. And then you have CH. This will be CH2. CH2, CH3. Got it? Yes or no? Nawal, you got this one? Yes, sir. Chaliye. Now write the products. First two I have done. Okay. Write the product for the next ones. Third and fourth. Send the answer on WhatsApp.
Please let me know if you have any doubts. Okay, if you get stuck, please ask me. So in the third one, the Mhm. second part of the equation, there's like a carbonyl group there, right? So will we add the H in? Yeah, same thing. Same thing happens in the Okay. third and fourth also. Same thing. Okay, this hydrogen will go there. Okay, and you will get a COH. Okay, and this carbon will have only 2 hydrogens remaining. Okay, Yeah. same thing happens here. What Mhm. about the second carbonyl group? Though? That remains as it is. No change there. Okay, Okay. so this reaction happens only between the carbonyl of one molecule, that is the reactive site, and the alpha of another. Alpha carbon of another molecule. Okay, only those 2 things reacts, everything else remains. Once you're done with this, then I will also give you some short tricks in order to make the molecule. This last molecule, that is your aldol product. If you're done with the third one, please send the answer. The product after hydrolysis is wrong. नवाल आप बस ऊपर का देख के छाप रही हैं, nothing else. खुद से दिमाग लगाइए. बस OH को हटाना है, वहां पे डबल बॉन्ड लगाना है ना. थर्ड एंड फोर्थ में आपका सेम मिस्टेक है. आफ्टर डिहाइड्रेशन जो आपने वहां पे H+ विथ हीट है ना, उसके बाद गलत है आपका. ठीक है.
एंड आपने बस ऊपर से कॉपी कर लिया है, नथिंग एल्स, इस वजह से गलत है। जो आपके पास, ट्राई टू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके, लुक एट दी अल्फा बीटा कार्बन। जो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन वाला प्रोडक्ट है ना, इन द थर्ड केस, नवाल आर यू सीइंग दैट Yes, sir. हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट जहां पे OH है, तो बीटा कार्बन में क्या क्या लगा हुआ है बताइए जरा। दैट OH वाला कार्बन है ना, COH वाला कार्बन, उसमें और क्या क्या ग्रुप्स लगे हुए हैं? CS3. इज देयर एनी हाइड्रोजन, इज देयर एनी हाइड्रोजन, ये बताइए। No. हाइड्रोजन नहीं। आप उसके नीचे जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वहां पे हाइड्रोजन कहाँ से आया? You just need to remove what? The OH and the OH from the beta carbon, hydrogen from the alpha carbon, right, Nawal? Yes, sir. So where did that hydrogen come from? Same thing you have done in the last example also, है ना? वहां पे भी Yes. आपने सेम वही चीज किया। प्लीज उसको करेक्ट कीजिए, हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पे। हनीफा, डन विद द थर्ड वन? यस हनीफा, Sent here the problem. यस सेंट मी, अच्छा। अब मेरे में डाउनलोड नहीं हो रहा है। Nope. नहीं, that's wrong. Hanifa, can you see what is wrong? Your hydroxy product is correct. See, Hanifa, you have done that correctly. CS3, you have made this OH, that is also correct. You have kept the CS3, that is also correct. Followed by two hydrogens on one carbon atom, that is also correct. Then you have C double bond O, and then you have CS3. You don't need to write in bond line structure अगर आपसे नहीं हो रहा है तो, ठीक है? And then CHO. CHO नहीं, sorry. You have C double bond O, and then you have CS3. Okay, here it is correct. Now you just remove this hydroxy, na, this H2O. You should have written CS3 followed by C, that is bonded to CS3, with a double bond C that is bonded to an H that is bonded to C double bond O, then that is bonded to CS3. Can you see that yours is wrong? Yes or no? Please tell me. एक तो आपने डबल बॉन्ड नहीं लगाया, Yes, sir. है ना? आपने कैसे किया है इसको? यहाँ पे ऐसे मार्क किया कीजिए, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, दिस इज 1 2 3 4 5 बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए प्लीज 5 कार्बन आटम, वो 3 4 5, ठीक है? फिफ्थ कार्बन आटम इज CH3, फोर्थ कार्बन आटम इज डबल बॉन्ड O, थर्ड कार्बन आटम और सेकंड कार्बन आटम में एक डबल बॉन्ड होगा बिकॉज आपका वाटर निकल रहा है, एंड देन यू विल हैव यहाँ पे एक CH3 होगा। दिस शुड बी दी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन में आपने गलती कर दी है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ज्यादा आप लोगों को। लुक एट दिस वन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? यहाँ पे आपके पास 1 2 3 1 2 3 थर्ड कार्बन आटम में OH, ध्यान से देखिए, छापिए मत, छापने मत लिखिए। 1 2 2 3 4 5 6 7, थर्ड कार्बन आटम, यहाँ CH3 नहीं, CH3 नहीं है, CH2 है। ethyl group है, तो I will make the ethyl group like this. Is that clear? Yes or no? Please tell me. In the third carbon atom, correct guys? Yes or no? दिख रहा है हाँ या ना? Yes, sir. Next, I also have a OH. Second. I will make a OH here. In the third carbon atom में हमारे पास क्या है? एक OH आ जाएगा, right? Fourth carbon atom,
Nothing, only 2 hydrogens. No, both carbon atom has 1 CH3. Can you see that? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. 5th carbon atom has a double bond O. 6th carbon atom is CH2 and 7th carbon atom is CH3. So that is it for me hydroxy product. One, two, three, four, 5, 6, 7. कुछ मिस नहीं हुआ? After that, heat in the presence of H plus. यहाँ से आपके पास this is alpha, this is beta. इन दोनों के बीच में double bond. Number of carbon atom will be still same. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. You will have 1, 2. यहाँ पे आपके पास double bond O. Alpha and beta के बीच में double bond. This alpha has a CH3 group and this beta के पास क्या है? CH2 CH3 group. If I want to write this, आपको इस तरह से मिले ना, फर्स्ट में OH नेगेटिव, सेकंड में H प्लस एंड हीट, तो कैसे करना बता रहे? पहले तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है? एंड नाउ यू सी हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 7 कार्बन एटम्स, ठीक है? तो CH3 CH2, आपके पास जो कार्बोनिल कार्बन एंटी अल्फा कार्बन, उसके बीच में आप कर दीजिए डबल बॉन्ड. CH2 के बाद कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन. इस कार्बन के पास क्या था? CH2 CH3. और ये जो आपके पास अल्फा कार्बन था, इसके पास था एक CH3. देन यू हैव C डबल बॉन्ड O, देन यू हैव CH2 CH3. ठीक है, सेम प्रोडक्ट है यहाँ पे. सो व्हाट आई डिड, इस सबको बनाया हमने, कार्बन कार्बन को अटैच किया, यहाँ से डबल बॉन्ड O निकाला, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए. ठीक है, दैट्स इट. बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के लिए. ठीक है, you have the same structure like this. You write one structure like this, carbonyl carbon का oxygen, and then same structure ऐसे लिखा आपने, इसका alpha carbon. And then what you need to do, you need to join both of these things, the carbonyl carbon and the alpha carbon with a double bond. OH negative, H plus and heat. ठीक है, you will make like this 1, 2, 3, 4, 5 double bond. दोनों सेम स्ट्रक्चर्स हैं. कैसे देखिए बताइए. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 1, 2, third carbon atom is having double bond O. Then fourth carbon atom is having a CH3 group. Fifth carbon, fourth and fifth is having a double bond. Fifth carbon atom is having a ethyl group. देखिए, सेम प्रोडक्ट. ठीक है, एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल. यहाँ से आप इसको एक सिंपलेस्ट यहाँ पे क्या आपको करना है, यू हैव टू नो हाउ टू राइट द अल्फा कार्बन एंड द कार्बोनिल कार्बन. दैट्स इट. अगर आप ये वाला मेथड यूज करिएगा तो छापिए. आप लोगों को कंपाउंड लिखने नहीं आता, लेकिन मॉलिक्यूल्स लिखने, हमको इसमें बड़ा ही मतलब हैरानी हो रही है इस चीज को देख के कि एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, लेकिन आप लोग मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स लिखने नहीं सक रहे हैं. Either you guys did not practice at all, मतलब कुछ भी, मतलब जब आपका क्लास होता है बस आप वही करते हैं, उसके बाद आप दोबारा फिर से एक कंपाउंड लिखते ही नहीं है खुद से. दैट मे बी द केस, अदरवाइज देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. और अगर आप सोच रहे हैं कि 2 दिन पढ़ाई करके सिर्फ आज के दिन जिस दिन क्लास होगी उस दिन हम पढ़ लें तो हो जाएगा, नहीं होगा वैसे. ठीक है, अब नाउ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स. फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है कि आपने, जब तक फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशंस, उसमें हम क्या कह रहे थे, 15 मिनट क्लास से पहले, 15 मिनट क्लास के बाद, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है. उसका जो असाइनमेंट मिलता है असाइनमेंट कर लिया कीजिए, राइट. लेकिन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू हैव टू डू प्रैक्टिस डेली, नहीं तो फिर भूल जाइएगा. एसीटोन नहीं समझ में आएगा क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड समझ में नहीं आएगा क्या होता है ना. आप अगर 100 बच्चों से मिल रहे हैं, 100 का नाम आपको कैसे याद रहेगा जब तक आप उसे रोज इंटरेक्ट नहीं कीजिएगा. ओके, सो देयर आर एटलीस्ट 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट यू शुड रिमेंबर बाय नेम कि कैसा दिखता है नहीं दिखता है ना. बट अगेन हम वो नहीं बोले कि 100 का लिस्ट निकाल के आप उसके साथ बैठ जाइए, अब डेली उसके साथ मिलिए. ठीक है, जस्ट मीट विद देम डेली एंड यू विल
Get all of those 100 names. Then guys, yes or no, please tell me. Yes, sir. Leave some space and then इसके लिए space थोड़ा छोड़ दीजिए. This is the statement of aldol condensation कि क्या क्या होता है. Aldehyde and ketones with at least one alpha hydrogen undergoes self condensation in the presence of a dilute alkali to give beta hydroxyaldehyde or ketone, which on heating with dilute acids undergoes dehydration and forms alpha beta unsaturated aldehyde. ठीक है, just like leave how many 1 2 3 4 5 6 7 page 7 lines, sorry, not pages, and then write cross aldol condensation. Now in cross aldol condensation, you can do the condensation, the same reaction, aldol reaction, with two different aldehyde, two different ketone, or one aldehyde and one ketone. Okay. So in this earlier case, there was self aldol condensation in which the molecule was reacting with itself. Now it is reacting with another molecule. You see. For example, if you have CS3CHO plus this is your ethanol, and you have CS3CH2 CHO. Now here we have two molecules, ethanol and we have propanol. Now, first thing, remember that not all ethanol molecules will know that there is propanol molecule in the container. In my beaker, if I add ethanol and propanol, not all ethanol will be surrounded with some propanol. There will be some pockets, small portions in which ethanol is only surrounded by ethanol molecules. In that case, those ethanol molecules will undergo self-aldol condensation, giving you this product. First of all, the beta hydroxy aldehyde. So here we will have CHO here pe, and then OH here pe. And then further on H plus and heat, I'm going to get 1 2 3 4 CHO and a double bond here. Similarly, not all the propanol molecules will be knowing that there are ethanol molecules. So some of the propanol molecules will undergo self-aldol condensation, and they will give you 5 1 2 3 4 5 CHO. Now in this case, this carbon atom will have a CH3. This carbon atom will have a OH. Okay, and then H plus and heat, you will be getting 1 2 3 4 5 CHO. This CH3 is as it is. There's a double bond between the alpha and beta carbon. Okay, so this is the product that you are going to get from self-aldol condensation. Now there will be cross-aldol condensation. Now in one of the cases, what you can do, expand the carbonyl of ethanol. If I am going to expand the carbonyl of ethanol, then my molecule will be something like this: CH3 carbon. This is ethanol, so only two carbon atoms. I'm starting with CH3 and then carbon atom. Its double bond O will become OH. It has one hydrogen as it is. It will make a bond with the alpha carbon of the propanol. This is the alpha carbon, that is CH2. So this CH2, one of the hydrogen has gone to oxygen, so it will just have 1 2, that is one hydrogen and one CH3, followed by CHO. Further heating in the presence of mineral acid, it is going to give me 1 2 3 4 carbon atoms. 1 2 3 4 carbon atoms. Fourth is CHO. The third carbon atom has CH3, and these two alpha and beta are going to have a double bond. Okay, this is from the cross-aldol condensation. In the next case, what is going to happen? I will expand this carbonyl carbon of propanol. So I will have CH3, CH2, C, OH, and one hydrogen. This carbonyl carbon will be attached to the alpha carbon of the ethanol. This is the alpha carbon. It had 3 hydrogen. Now it will have only 2 hydrogen because one of the hydrogen has gone to the carbonyl of the previous molecule. So it will have hydrogen here, it will have hydrogen here, and then followed by CHO. When I have H plus and heat, this H2O will be removed, and you will have 1 2 3 4 5 carbon atoms. CHO. This is the alpha carbon. This is the beta carbon. The alpha and beta are going to have a double bond like this. That's it. These are the products from cross-aldol condensation. Please write this down. आप लोग बना पाइएगा खुद से अगर आपको बनाने दिया जाए क्रॉस का? टेल मी, नवाल एंड हनीफा. Yes. प्रोसेस पता है आप लोगों को ना? ठीक है.
तो खुद से कीजिए। जी लिखिए आप लोगों ने, हाँ या ना बताइए। टेल मी, नवाल एंड हनीफा wrote the cross aldol products. Yes or no, नवाल एंड हनीफा Yes, sir. बताइए। What should I write? Tell me. बोलिए। बॉन्ड लाइन बनाया है आपने या फिर कैसे बनाया है? हनीफा, आर यू डन? यस हनीफा, आर यू डन? No, sir. नहीं बन रहा आपसे? Mm, ठीक है, बोल बोल के करने की, आप बोल बोल के करती हैं या नहीं करती हैं? कीप योर माइक ऑन ना, कीप योर माइक ऑन। ठीक है, थोड़ा तेज बोलिएगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आती है कभी कभी। How many molecules do you have? Tell me. How many molecules do you have? हनीफा, two, हनीफ, जोर से। two. Two. ठीक है, आई हैव टू एक्सपैंड। क्या एक्सपैंड करते हैं? आई एक्सपैंड, बताइए। एक्सपैंड CH3. पहले का क्या एक्सपैंड करते हैं? फर्स्ट मॉलिक्यूल का क्या एक्सपैंड करते हैं बताइए? कार्बन ना। The carbon. और दूसरे मॉलिक्यूल का Uh, uh, बताइए। नो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? as acetaldehyde. No. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? Mm, methyl. प्रोपेनल। बोल रहे थे हम, नहीं बोल रहे थे। इथेनॉल प्रोपेनल, ध्यान क्या रहता है आप लोगों का?
Hmm? Did you not hear me saying ethanol and propanol? Mm. Yes or no? No. No, sir. No, you did not hear me saying ethanol and propanol. Then listen No. carefully. When I wrote this molecule, then I said I have two molecules here. This is ethanol, 2 carbon atoms, and an aldehyde, 3 carbon atoms, are aldehyde. This is propanol. Okay, so this is also known as acetaldehyde, which is its common name. Fair. Which one do you want to expand? Bataiye. You want to expand carbonyl of ethanol or propanol? Tell me. You want to expand carbonyl of ethanol or propanol, Hanifa? Ethanol. Ethanol. Look at the previous examples. When you expanded the ethanol, sorry, when you expanded the carbonyl of this one, what happened to the carbonyl carbon? It became, OH. same thing is going to happen, yes or no? Yes. So, but please remember, will anything happen to the CH3? Tell me. No. No, if I'm expanding that, then nothing. So what should I write? Tell me. What should I write? CH? CH3. CH3, C. C, OH. OH. And what are the other two bonds? CH3, CH2, O, CHO. This carbon atom, the carbonyl carbon will attack on which carbon? 1, 2, or 3? 2. Which carbon? 2. 2 carbon. So I will write here what? Carbon. CH. No, this had 2 hydrogen. Now it will have how many hydrogens? How many? 1. But this carbon, it had one more bond, na? वो bond किसके साथ होगा? CH. H. Okay, what about this carbon? It will have 2 more bonds. CH2, CH3. No. Which carbon is this? 1, 2, or 3? Which carbon is this? 1, 2, or 3? It is from propanol, right? Yes. Which carbon from propanol? 1, 2, or 3? Third one. Third one. Reaction happens between carbonyl and alpha carbon, ना? कौन सा carbon alpha carbon है? The second one. So which carbon is this? The second one. What are the 2 other bonds of second carbon? CH3 and CHO. Are your answers important or is my question important? What will you remember? आप आंसर्स याद करके रखिएगा या सवाल याद करके रखिएगा जो हम पूछ रहे हैं? Yes, Hanifa? Tell me. What will you remember? Your answers or my questions? Both नहीं. Only my questions because the answer is going to change with each molecule. But मेरे सवाल change नहीं होंगे. Right? कार्बोनिल कार्बन अल्फा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन अल्फा कार्बन, बाकी बस इन्हीं दोनों पे आप फोकस कीजिए. बन गया ना? Now tell me, H plus and heat. CH3. CH3. C double bond. C double bond. Double bond. C. CHO. C. What? CHO. CHO. What about these two groups? यहाँ पे क्या होगा? CH3. In which one? Alpha में या बीटा में? किसमें CH3 होगा? Alpha will have CH3 and beta will have CH2. CH2. जी भाले बिल्कुल. ये यहाँ पे गया ना? कहाँ पे देख के बात करती हैं आप? Remove this. What is remaining? Huh? Alpha, beta. What will be in beta? H.
क्या मुश्किल है हनीफा? I got confused. Why you are getting confused? आपको हम वही तो बोल रहे हैं, कहीं और देखना ही नहीं है. You don't have to look anywhere else. Only alpha and beta carbon. सिर्फ यहीं पे जो कुछ होना है होना है. Okay. All the other groups are going to be different. Oh, sorry. All the other groups are going to be the same as that of reactant. Not only you will expand the carbonyl carbon of. You will expand the carbonyl carbon of ethanol या propanol. Next में किसका carbonyl carbon? अरे ethanol का तो अभी किया ना. अभी तो ethanol का किया. अब किसका करना है? Oh, yeah, propanol. So tell me. What should I write? CH3. CH3. COH. COH. इस मॉलिक्यूल को देख रही है ना आप? Sir, did we just do that one? अरे that was. क्या लगता है हमने कौन सा किया बताइए तो जरा, पहला वाला या दूसरा वाला? दिस इज द कार्बोनिल कार्बन ना, ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बन एंड देन अटैच टू CH3. यू हैव टू एक्सपैंड व्हाट, प्रोपेनल या इथेनॉल? ये कौन सा फ्रैगमेंट आपको ये क्या दिख रहा है, कहाँ से आया है? देयर आर टू फ्रैगमेंट्स यहाँ पे ना, देखिए. ये बताइए, दिस इज फ्रॉम इथेनॉल और प्रोपेनल? दिस इज पिंक वन और एक मान लीजिए ब्लू आपके पास है. बताइए, टेल मी, किसका कार्बोनिल एक्सपैंड हुआ था? उस कार्बोनिल, इथेनॉल. नाउ यू विल एक्सपैंड द कार्बोनिल ऑफ Propanol. बताइए क्या लिखें? CH3. CH3. CH. CH. CH2COH. ऐसे? हाँ. No. रिपीट व्हाट आई से. कैसे बताते हैं हम, क्या करना रहता है सबसे पहले बताइए. First we take the carbonyl. एक्सपैंड दी Carbonyl. कार्बोनिल वाला, Group. carbonyl group, right? How many, the propanol that you have taken, that it has how many carbon atoms? 3. 3. Should I change anything in the first one? No. Should I change anything in the second one? No. Now tell me, for the third one, what should I write? C. C. OH. And then 2 more groups. What would be the 2 more bonds? Tell me. CH3. CH3. एक तो सबसे पहले आप इसका बताइए ना, ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा, हाइड्रोजन पहले बोलिए. And then tell me the next one. C. Now this will be attached to C. the alpha carbon of C. ये कार्बन किसका है, इथेनॉल का है, प्रोपेनॉल का है? दिस कार्बन एटम. Pro. हाँ. Ethanol. नहीं आ रहा ना समझ में? नहीं आ रहा समझ में, जल्दी बताइए हाँ या ना. प्रोपेनॉल. टेल मी. We will add it to the next one, right? नेक्स्ट वन. हाँ. सो दिस, ये कौन सा है आपका, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है? And this is propanol. सो द नेक्स्ट कार्बन विल बी Ethanol. ethanol. It will have which carbon? Alpha carbon, right? Yeah. Okay, so it will have 3 more groups. Tell me, what are the 3 more groups? H. H. CHO. And CH3. CH3. CH2. CH2. Oh, H. सब बोल दीजिए ना. क्यों बोल रही थी आप, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है. अरे इस कार्बन में देखिए भाई, 3 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन बचेंगे, 1 CHO बचेगा. What else is there, हनीफा?
Tell me the product for this one. CH3. 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 CH2. The C double bond. C. Double bond. Double bond. C. C. CH1. That's it. Then we'll add CH3 on the alpha. कहाँ से आ रहा है अल्फा में? अरे भाई अभी तो हमने समझाया, यहाँ पे इसको हटा दीजिए आप, जो बचा उसको लिख दीजिए. Oh. Oh, why? No, no, How no, can no, you make the same mistakes from? no, Yeah, I tell me, said- Hanifa. You I said said- CH3. You said CH3, right? You did not say Yes. CH3. No, I said CH3, but then I was saying H, but like Where do you look? Tell me, Hanifa. कहाँ देखती हैं आप जब आप ये प्रोडक्ट हमको बता रही हैं? Then where do you see the the? one which we just did. There is no CH3. तो आप कहाँ, कैसे आप CH3 एक बार भी बोल सकती हैं? How can you make that even once? Write this down. Done. You write it on your own. Let me know once you're done. Done, Hanifa? Can you do it without looking at it? Yes, sir. Can you show the second? Second one? No, you don't get to see. Tell me, can you do it without looking at it? Hanifa? This is your homework, okay? This question? Sorry? This question? Yeah, the rest of the two products. Take your time. Okay, you have all the tools, how to write, how to not write, and everything. Okay. Will it be fine, Hanifa? Yes, I just have doubt in the carbonyl thing. Like, how do we decide which one to go first? No. You just, आप किसी को भी ले लीजिए. You have to make two products, right? You Yeah. take the carbonyl of the first carbon atom for first case में, and the alpha of the second molecule.
Okay, That's forgive. all. That's all. And then in the next time, you take the carbonyl of the second molecule and the alpha of the first molecule. Okay. Okay. So both the things can happen, right? Either Yeah. this ethanol molecules, oxygen can abstract the hydrogen of this one, or what can happen? The oxygen atom of the second molecule can abstract the hydrogen of the first one, right? So both of these things can happen. So पहले उसको ले लीजिए, पहले इसको ले लीजिए. Okay. Right, next. Aldehyde and ketones containing no alpha hydrogen can undergo cross-aldol condensation. Can undergo cross-aldol condensation with aldehyde or ketone with alpha hydrogen. Spin up carbonyl of the molecule with no alpha hydrogen. Molecule with no alpha hydrogen. And if I look at the molecule A and B and tell me which has alpha hydrogen, A or B? Options are A, B, both, none. Which has alpha hydrogen, A or B? Both of them are attached to the carbon. What am I asking? What is my question? What did I ask, Hanifa? Which one has alpha hydrogen? Which one has alpha hydrogen? What is alpha hydrogen? The one attached to the carbon group. The hydrogen attached to carbonyl group. Huh? Yes. The hydrogen attached to carbonyl group. The hydrogen attached to carbon group. The hydrogen attached to. ठीक. तो फिर आप सबसे पहले लिखिए alpha hydrogen की definition. Please write. Alpha hydrogen is not the hydrogen attached to carbonyl group. Alpha hydrogen is the hydrogen attached to alpha carbon. Did I say hydrogen या फिर carbon को हमने बोला था? बताइए तो. Did I not say if you have C double bond O? हमने तो खैर पूछा था आप लोग से. अल्फा हाइड्रोजन का मतलब पता है? आप लोगों ने कहा था हाँ सर पता है. Yeah, tell me. No, I don't know. I don't think you said it. Because I remember it saying that it's the one attached to the carbon. So the carb नहीं देखिए. You were answering it correctly because हम उस तरह से आंसर यहाँ पे देखिए. Which is the alpha hydrogen यहाँ पे? These hydrogens are alpha ना? ये hydrogen तो alpha नहीं है ना? But those are not attached to carbonyl carbon. This is the hydrogen attached to carbonyl carbon, right? Can you see that? Yes. This hydrogen that we said यहाँ पे बताइए. ये आपके पास this is the yellow hydrogen. These are the blue hydrogen. Which is alpha hydrogen? Yellow or the blue one? Yellow. Yellow नहीं. The यही तो बोल blue. रहे हैं. The blue. The blue. दो ही ऑप्शन है हनीफा. या तो थोड़ा रुक के बोल लीजिए आप, है ना? पहला आंसर आप मत बोला कीजिए जो आपको आंसर बोलना है.
ठीक है, रुक जाइए, फिर आपके पास सही आंसर निकल जाता है, द ब्लू वन, राइट? Yeah. So is that attached to carbonyl carbon? Tell me. No, it's attached to the alpha carbon. This is attached to the alpha carbon. ठीक है? Tell me. A and B. Which has alpha hydrogen? A or B? Can you see the levels on which you can make mistake, Nipa? Yeah. Start studying, ठीक है ना? The most important thing, the structures. You should know where are these things. Carbonyl carbon कहाँ पे? ये सारी चीजें तो this becomes very basic. अगर ये नहीं आएगा तो फिर आप बहुत mistakes होंगे. और आपको लगेगा कि सही करके आ रहे हैं, because you know the wrong things has to be true. Alpha hydrogen is the hydrogen attached to carbonyl carbon. और डेफिनेशन आपके दिमाग में लगता है, भले ही आप पहले आप सवाल सही कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम एक पैटर्न हमने बना दिया था कि इस कार्बन को इस कार्बन को इस कार्बन को, बट एज सुन एज यू गेट अ न्यू मॉलिक्यूल, गलती होगी. टेल मी हियर नाउ, which is going to have alpha hydrogen, A or B? Which has alpha hydrogen, A or B? B. करेक्ट. एक में अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा? ठीक है, सो विच वन शुड आई ओपन, ए और बी? E. We have to open A. So A के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? कार्बन. This carbon will have 1, 2, 3, 4 groups. ठीक है ना? तो it will have 2 hydrogens and it will have OH. Correct? Yes or no? Yes, sir. And then it will be attached to. अब ये A तो खत्म हो गया ना, अब B में किस में अटैच होगा? ये 1 कार्बन या सेकंड कार्बन, किस कार्बन से अटैच होगा? Tell me A और B. CH3. 1 और 2, 1 और 2 बताइए ना, 1 और 2 बताइए. Which carbon? 1 और 2? 1 carbon. Now this 1 carbon will have 3 more bonds. What are the bonds? H. H, H. 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 यहाँ पे भी H. अरे एक हाइड्रोजन तो वहां चल जाता ना यार, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया ना हनीफा. Yeah, yeah. Yes. So It's what is the next? CHO. कितनी दफा आप सेम मिस्टेक करेंगी? हाँ, विथ ईच क्वेश्चन यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक. मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने पिछले सवाल से कुछ समझा ही नहीं. अब बताइए यहाँ पे क्या क्या होगा? रिमूव दिस एंड टेल मी. बताइए, जस्ट रिमूव दैट एंड टेल मी व्हाट आर द थिंग्स. सी नहीं, हाइड्रोजन से स्टार्ट कीजिए. अच्छा CH2 बोल रही हैं आप, वेरी गुड, थोड़ा तेज हो गई. CH2, उसके बाद Double bond. डबल बॉन्ड C. C. Single bond CHO and 1 hydrogen. चलिए, टेल मी A और B. Which one has alpha hydrogen? A or B, which one has alpha hydrogen? B. Okay, so which one should I expand? Carbonyl of which one? A or B? E. E. Tell me. हाँ, A में बताइए कहाँ से स्टार्ट करें, क्या लिखे हैं? Can you describe me the A structure? A structure को आप कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा, बताइए. बोलिए बोलिए, हाँ हाँ बोलिए. Benzaldehyde. बेंजल्डिहाइड, और थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करके, बेंजीन अटैच्ड विद Aldehyde. CHO ग्रुप, राइट? Yeah. बेंजीन को कुछ होगा? विल बेंजीन बी चेंज? No. तो फिर बेंजीन से स्टार्ट कीजिए ना, बोलिए क्या होगा यहाँ पे. सबसे पहले क्या लिखे हम? बेंजीन विल बी एज इट इज. हाँ, बेंजीन. एंड देन बॉन्डेड टू कार्बन एटम, और कार्बन एटम के पास 3 ग्रुप्स होंगे. बेंजीन तो कार्बन से अटैच है, इट विल हैव 3 more groups, right? What are the 3 more groups? Tell me. One will be H. अरे O. हाँ H. उसके बाद बेंजीन देख के पागल हो गई लग रहा है बिल्कुल. आप बताइए, अरे पुराने सवाल की तरह ही है. अब इसको छोड़ दीजिए ना, कि बेंजीन तो हो गया, यहाँ तक बेंजीन था, उसके आगे बताइए. सॉरी, We'll add the O. ओ बस O. OH.
हाँ OH होगा ना, क्यों घबरा रही हैं आप? OH हमने 10 बार नहीं, अभी तो हो गया ना, 10 बार तो हो ही गया होगा, 10 प्रोडक्ट तो कम से कम बना लिए होंगे OH। एंड देन अब उसके बाद ये बॉन्ड जो लगेगा, दिस थिंग इज डन। Yeah. 1 2 3, कौन से कार्बन के पास लगेगा ये बॉन्ड बताइए? Oh, विच कार्बन, 1 2 और 3? 2. 2। वी हैव, एक का कार्बोनिल है, दूसरे का हनीफा कौन सा कार्बन? The reaction takes place between the carbonyl carbon of one molecule and dash carbon of the another molecule, हनीफा। Uh, अल्फा कार्बन कौन सा है यहाँ पे? What? जोर से। 1. टेल मी, क्या लिखे हम यहाँ पे? कार्बन आटम। C. Carbon हाँ, atom. H. H. C. C double. बोलिए, पूरा C बोलिए। double. C double bond. सी डबल बॉन्ड O. एंड देन C. सी CH3. H plus and heat, tell me. बोलिए। With the benzene ring and बेंजीन रिंग, then then C C double bond C डबल बॉन्ड C attached to the carbon group एंड देन CH3 hydrogen and यहाँ पे hydrogen. देखिए, एक एक चीज रूल देखिए। ठीक है, आपने इस तरह से लिखा, लेकिन इस कार्बन में जब आप बोल रही हैं ना, तो उसमें सबसे पहले सिंगल बॉन्ड्स को बोल दीजिए, हाइड्रोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, देन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये पूरे Okay. मॉलिक्यूल को लिखने के बाद हाइड्रोजन नहीं लिखा जाता है, साथ साथ में लिखा जाता है, ठीक है? Okay. राइट, नेक्स्ट। डिटरमाइनिंग रिएक्टेंट्स ऑफ aldone. Do you have any other class? No. And then you will stay. आपने लिखा ये हनीफा? Sorry. Did you write this? हाँ, No. तो लिखे ना, जल्दी लिखिएगा। देख के लिख रही हैं या खुद से लिख रही हैं आप हनीफा? खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, Right. नहीं आएगा वरना कुछ। सारा कुछ तो मतलब हम पूछ रहे तब आप बता रही हैं, उसमें हम जितना अभी तक ये लास्ट सवाल है इसका, वहां तक आपको हमको हमेशा पूछना ही पड़ा है कि यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, उसके बाद आप प्रोडक्ट बना रही सही सही। सो ट्राई टू रिमेंबर माई क्वेश्चन, जो जो हम पूछ रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज तो बोल बोल के हम थक गए, 10 बार अपने आप को खुद बताइए, आप कार्बोनिल कार्बन अल्फा कार्बन, अदर ऑल द अदर थिंग्स विल बी सेम एज इट इज, नथिंग विल बी चेंजिंग देयर। The changes that will be taking place with is with only alpha carbon and the carbonyl carbon. Done? Yes, sir. If you have been given beta hydroxyaldehyde or ketone, that is the aldol product.
For example, you have 1, 2, 3, 5 CHO, CH3, OH. So this is alpha, this is beta hydroxy. Then you have to give what are the aldehydes or the ketone used for the formation of this product. Identify the alpha and beta, break the bond between them. You will get 1, 2, 3 carbon atom, 1, 2, 3 carbon atom here. The beta carbon, this is the beta carbon, should get a double bond O. और इसके बाद क्या बचा? एक इतना ही है. That means this is the aldehyde group because double bond O is at the terminal carbon. Whenever double bond O is at the terminal carbon, then it is going to be the aldehyde. Alpha carbon में आपको alpha carbon आपने break किया. You have to give CHO यहाँ पे है. This is CH3. This is the alpha carbon. Put a hydrogen here, and since we are making the bond line structure, you don't need to write anything because hydrogens are implicit. वहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है. But if you have been given the open, like the open structure CH3, CH2, CHOH and all, then you have to put one more hydrogen here because it has here only one hydrogen, but it has here two hydrogens. Okay, so what are the steps? Break alpha beta bond. You need to change the OH, COH to C double bond O in beta carbon. Put one hydrogen atom on alpha carbon. In B case, they can give you alpha beta unsaturated. Aldehyde or ketone. If you have this type of product, then again identify the alpha and beta. This is the functional group. So this is the alpha. This is the beta. Break this bond. You'll get 1, 2, 3, 4 carbon atoms. The fourth carbon atom has a double bond. So यहाँ पे आप इसमें C double bond over दीजिए. And if it is C double bond O, the other will be hydrogen. It is not the case कि always aldehyde मिलेगा, ठीक है? And then here also you have 4 carbon atoms. CHO. This was the alpha carbon. It will get 2 hydrogens, but since we are writing bond line structure, we don't need to show the hydrogens here. Break alpha beta double bond. Put double bond O on beta carbon. Put 2 hydrogen atoms on alpha carbon. Done. Hanifa, done? Yes or no? Tell me. Just a minute, sir. You have to do 2 reactions on your own. One is Cannizzaro reaction. In Cannizzaro reaction, these are shown by the molecules which do not have any alpha hydrogen. So what happens? 2 molecules, one of the molecule go production, the other goes oxidation. So एक से alcohol मिलता है, दूसरे से carboxylic acid. Do this Cannizzaro reaction, and second you have to do of benzaldehyde and acetophenone.
If you look at NCERT, they have only given you nitration. Nothing other than nitration is given, but you are going to do some other reactions also. After nitration, you will do bromination also for this and sulfonation. Let me write this down. What are the electrophilic aromatic substitutions that you need to do?